So hello friends, in this video you are about to see the GU drawing. You will be also shocked after seeing the final result. हमने पिछले पार्ट में आकजा ड्रॉ किया था और अब हम GU को ड्रॉ करेंगे. So this is part 2 of our drawing series of GU and Akaza. I also draw GU from the Infinity Caster arc जिसमें उसने अपना मार्क ओपन कर लिया है. So by me in every drawing eye is the hardest part to draw. Because अगर हम करेक्टर की आई ही गलत बना देंगे तो उसे वो शेप नहीं मिलती, जिससे हमारी ड्राइंग हमें खुद को ही अच्छी नहीं लगती. तो अभी तो मुझे भी लग रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया, पर जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे सही होता जाएगा. एंड इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन सी द एंड ऑफ द वीडियो फॉर द फाइनल रिजल्ट टू. We are leaving about 1 centimeter margin around the border of the page. उसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे. So many of you guys just leave the middle part of the video. So please don't do that. Because middle part में हम अगर ड्राइंग को लीव कर देंगे तो वो वैसी नहीं बनेगी जैसा हम सोच रहे हैं.
सो हेयर हमने गिव का फेस तो ड्रॉ कर ही लिया और मैं अब बाकी डिटेल्स कर रहा हूँ। ये गिव की वाटर ब्रीथिंग दिखा रही हैं। इसके बाद हम गिव का मार्क भी ड्रॉ करेंगे और उसके हेयर भी। आल्सो मुझे सभी हासिरास में गिव का मार्क सबसे अच्छा लगा। गिव का भी मार्क रिवील हुआ है पर मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा जितना गिव का है। पर सबकी चॉइस डिफरेंट होती है, तो कई लोगों को वो मार्क भी अच्छे लगते होंगे जो मुझे अच्छे नहीं लगते। Taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. So the major work of our drawing is done now. Just wait for 1 minute to reveal my full drawing. तो हमारी ड्राइंग डन हो ही चुकी है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की ड्राइंग कैसी हुई।
एंड इफ इट हैव डू इवन अ लिटर, सो कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। सो होप आप लोगों को ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, और वी विल डू कलरिंग इन द आकाजा इन दैट पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ड्राइंग कैसी लगी।